Hey guys, today's video is about Physics MDCAT UHS topic 8, that is to do with the electromagnetism and the magnet topic. I guess it encompasses 3 different chapters. So let's get on with it. An induced EMF is produced when a magnet is plunged into a coil, and the strength of an induced EMF is independent of. The answer is obviously C. Whenever the magnetic flux linked with a coil changes, there is produced an induced EMF in the circuit. Obviously, the EMF lasts only as long as the change in flux takes place. This is important. When a magnet is moved with its north polarity towards a coil placed in a closed circuit, then the inner face of the coil shows north polarity. Has to do with the conservation of energy topic. The direction of induced current is such that it opposes the cause that has produced it. This is obviously Lenz's law. Is the same as the right hand palm rule. Actually it's kind of different. Has the same usage. Determines the magnitude of the induced EMF. No. Bears no relation to the law of conservation of energy. Again wrong. Is useful in deciding the direction of an induced EMF. This one is correct. Now the right hand palm rule has to do with a coil which has a current flowing through it and the magnetic field that is produced by said current, and not due to induction effects. So the start of these are basic theoretical questions. As we will go further, questions are going to get difficult. So a coil has 500 square loops and each has side 10 centimeter, and this is placed normal to magnetic field and it is increasing at this rate. What is the induced EMF? Now think about this. I'll give you some time. Right, so have you considered this topic, this question? Induced EMF has this formula which we have read from A-levels, so no problem. It's N into delta phi over T. N being the number of coils, which are 500, and phi is the magnetic flux, and the formula of magnetic flux is B into A. Right, so they're saying the rate at which the magnetic field changes is 1 T per second. So this is incorporating both the B and the T. However, the number of loops and the area is not taken into account. So you multiply 500 by 1 and then you multiply by the area, which is 100 centimeters square. You have to convert 100 into 10 to the minus 4 so that it's in meters, and because of that we'll be left with an induced EMF of 5 volt. So let's start from the end now. The end questions are the more difficult one, I think, so I want to keep this video interesting. So there is a sinusoidal alternating current
in a resistor. So what is the mean power dissipated in the resistor? So the mean power can be a couple of things. It's 1/2 of the maximum power. This is a formula which is given in the book. You need to consider the statements. If the magnetic field is 0, then the magnetic flux is also 0. Likely because flux is equal to B into A. So the first statement is correct. If the magnetic flux is 0, then the magnetic field is also 0. That is not necessary because magnetic flux incorporates area. It also incorporates, I think it's BA cos theta. Even if we have an area, but it is not at an angle that we want, because cos 0 is, my apologies, I think it's sine theta. Phi is equal to B into A into sine theta. So in general, when we consider flux, we consider this area, and we consider a plane sort of that is perpendicular to this area, and we take the angle from this plane and not from the horizontal. If you have your books with you, your physics FEC books, you can take a look right now to clarify any confusion. It's on page number 1. It's in the first magnetism topic, I think. Yes, it's BA cos theta. I mess up, right? BA cos theta. So we take this sort of like this plane that is perpendicular to it, and we take angles according to it. So when the angle with the perpendicular plane is 0, that is when we have maximum flux. But if the angle with it is 90 degree, even though there is a magnetic field, there won't be any flux observed. Or if there isn't any area, we have a point charge that is dimensionless, then again we won't have it. So may be true, both I and 2 are true. 1 may be true, 2 is true, but 1 and 2 are false. Well, 1 is true. This has the capability of being true if certain conditions are met. So it's 60C and 59A. The strength of the magnetic field around a long straight wire carrying current is same everywhere around the wire at any distance, inversely proportional to the distance, inversely proportional to the square of the distance. Obviously it's inversely proportional to the distance, we don't have a factor of square. We have a positively charged particle that enters in a uniform magnetic field with a uniform velocity. Now the question is about the possible trajectory. So the only information they have given us is that it is positive, that it is entering the field, and that it is uniform. Can the trajectory be a straight line? Yes. If the path followed and the magnetic field lines are parallel, there won't be any force exerted. In such a case, there won't be any deviation. So they ask, is it possible for there to be a positive charge, a moving positive charge in a magnetic field that does not move centripetally? A circle would be if there is a perfect 90. A helix will be achieved if it's
it's not 0 but it's not 90 either, or if it's not 90 but it's not 180 either. So all of them can be true under certain conditions. When a charged particle moves through a magnetic field, it suffers a change in direction, it suffers a change in energy, speed or momentum. Direction can be changed, energy is not changed, speed is oftentimes not changed. It's the velocity that changes in terms of direction, and the momentum does in fact change. Because momentum is mass into velocity, if there is a change in direction, there will be a change in the velocity, and so there will be a change in the momentum. So charged particle, magnetic field, I think both are correct. This might be a bit of a faulty question to ask. Speed is the same, so energy will also be altered. This is because the force is acting at 90 degrees and so does not change the magnitude of the velocity. So this is a numerical. A narrow electron beam passes undeviated through an electric field of 3 × 10⁴ volt per meter. There are a couple of units for electric field. One is volt per meter. The other one is charge per coulomb. My apologies, it's force per coulomb. So Newton per coulomb, because it's force plus charge. So the electric field is overlapping with the magnetic field, and it's 2 × 10⁻³ Weber per meter square. If the electron motion, the electric field and the magnetic field are mutually perpendicular, then what happens to the speed? So what that means is that the electron is perpendicular to the electric field, right? And the electron is also perpendicular to the magnetic field, and the electric field and the magnetic field are perpendicular to each other. So, like in the x, in the y, and in the z axis. And what is the speed of the electron? That is a good question. We have actually this formula in which we equate the forces, but that is usually just taken when they are the same, so I'm not sure if this will apply. I think it's V is equal to B over E, but that's when we assume that they are kind of like cancelling each other out and there isn't any deviation observed. And that is when you derive it, and we've done this at A levels. It's E is equal to F into Q is equal to B into Q into V. E into Q, sorry, Q cuts out, so it's V is equal to but that's a bit different in that we're assuming that there isn't, that the effects cancel each other out. But when you're saying undetected, this one should apply. V is equal to E over B. E is 3 × 10⁴, whereas B has a value of 2 × 10⁻³. We get 1.5 × 10⁻⁴. This could be it. I'm not really sure if it's over here. It's E over B, 3 × 10⁴ over 2 × 10⁻⁻³. So it should be 1.5 × 10⁻⁷, because negative when it gets to the top becomes a positive. So 55 ought to be C.
Let's move onwards to 54. So a charge is fired through a magnetic field and the force acting on the charge is maximum when the angle between the direction of motion of the charge and the magnetic field is, we know it's 90, and if you convert 90 into radians it comes out as pi over 2. Answer is D. When an electron is moving in a region of perpendicular magnetic field B, then work done by the field is 0, definitely. The acceleration of the electron is 0. Whenever there is a change in velocity, it is impossible for the acceleration to be 0. Velocity is constant, again not possible because direction is changing. The acceleration of the electron is constant along the tangent to the circular path. Actually it's constant towards the center or in the radial direction of the circular path followed. If someone asks what A is, acceleration as we know is basically F over m. F is basically E into Q, or because this is a magnetic field, P into Q into V being the initial, I guess, being the magnitude, my apologies. So acceleration is V into Q into the V over the m. So while it is indeed constant, because all of these values are constant, it is not towards a tangent to the circular path but radially directed. The magnetic flux linked with a vector area A and a uniform magnetic field B is, so we're talking about the magnetic flux linkage with vector area A in a uniform magnetic field. Magnetic flux is a vector quantity, and vector quantity is what you call a cross product. So it's gonna be this one over here, because this implication is that it's a scalar product, it's a vector product. A is a vector whose magnitude is the area of the element and whose direction is along the normal to the surface of the element, theta being the angle between the direction of the vectors P and A. My apologies, a dot product is actually a vector product, so it should be B. A-level students might have a problem with this, I think, as I do. So we should go over vector products, what a vector product is, what a scalar product is, stuff like that. And the cross product is a vector product. So one wonders why is it B and not A. We will going to go over magnetic flux and magnetic flux density. Like electric flux, the magnetic flux through a plane of element of area A is given by the dot product of P and A. And we have to know that A is a vector whose magnitude is the area. You know, vector into vector can either be a vector or a scalar. This is worth writing down. Phi is equal to B into A. This is a dot product or a scalar product, and this means that magnetic flux is a scalar quantity. And so when we remove the dot, it becomes V A cos theta, which is equivalently important.
Moving onwards, a long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis, and if the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, then the new value of the magnetic field is, there is a formula for this. It's B is equal to N into mu naught into I. Mu naught is, I think it's permeability of free space. Yes, it's the permeability of free space. And we have N and we have I, and N can be number of turns per centimeter. Actually, it's number of turns per meter because we are doing this in SI, but if the number of turns per centimeter is fallen, then the same change will be incurred. Like if it's 1 per centimeter, then it will be 100 per meter, and if it halves, it becomes 50. So that change is a change of 1 by 2. And we've also doubled the current. Then magnetic field, there won't be any effect because mu naught is actually a constant, so there won't be any change. It will be B. So when a charged particle moves perpendicular, the speed of the particle is changed. False. The speed remains unchanged. Direction changes and acceleration does in fact change. There's a constant new value of which 50B. And yes, mu naught is the vacuum permeability. So we have a proton and an electron which have equal momentum, and they're thrown in a magnetic field. Then both will remain undeflected. That is a good question. It's really dependent on the angle at which they enter, which has not been specified. Path of the electron will be more curved than that of a proton. Possible. The path of the proton will be more curved than that of the electron. Unlikely. The path will be equally curved. Unlikely. But the thing is, we're talking about momentum. Mass and velocity both matter. So let's derive something. Let's equate B into Q into V with mv square over r. We want the radius, so it becomes B into Q into R is equal to mv, and mv is momentum. They have the same value of B into Q into R. B is obviously the same, Q is the same, being because proton and electron have the same charge, just different directions, so R ought to be the same. We have a long solenoid and it has n turns per meter. So they weren't actually given us any value. And a current 1 ampere is flowing through it. So what is the magnetic fields at the ends of the solenoid? It ought to be constant throughout the internal portion of the solenoid. Outside it will be 0. Anyways, we use n into 1 into mu naught, so it should just be n into mu naught. 1 ampere has n turns per meter, so it's mu naught into n into I. So we have an electron accelerated through potential difference V, right? So it will have, if they ask you for the energy possessed by it or the velocity, you can find it easily. E into V will be the energy so possessed.
right? So we know the name of the particle. So if the accelerating potential increases to 2v, then the electron will experience a force. That is a good question for many reasons, because the value of the force is dependent on B into Q into V. B and Q will obviously be the same. They're hinting what sort of a change would we observe in the velocity. For that, we have an equation: E into V is equal to 1 by 2 into m into v square. So it's 2ev over m under root. So if the velocity is increased by a factor of 2, there would be, my apologies, if the total energy is increased, the volt is increased by a factor of 2, that would mean that the velocity ought to have increased by a factor of 4 for such a change to be observed, and this is because of the under root factor. We're assuming everything else is the same. So if it increases by 4v, so it's v into q into 4v, so the force ought to increase by the same amount. Maybe I'm making a mistake over here. Force really should be b into q into v. We have equated E into V 1 by 2 mv square. So it's 2 into E into V over m. So if 2 into E and m are constant and the voltage increases by 2, there ought to have been an increase by 4 times in the value of V for such a change to occur. So it should experience 4 times the force. Let's go over this again, maybe we're missing something out. An electron accelerated through a potential difference V, that is clearly indicative of the amount of energy it would possess. If the accelerating potential increased to 2 volt, then the electron will experience a force under root 2 into F doesn't make sense. 2 into F similarly does not make sense. Simply F. So it's a uniform transverse magnetic field. That is a good question. Maybe transverse has an edge to it. Transverse means sort of like in cross section. U is uniform, so B should be the same. Experiences a force F. Accelerating voltage increases to 2V. Energy possessed will increase by the same amount. Or if we simply think of it in this manner, if this is increased by 2, voltage should have increased by just under root 2 for this change to be observed. So it's 2 into E into V over M. This is equal to V. And so if there is an increase of 2 times in the voltage, they should have been increased by under root 2. My bad, this was my mistake. So when a charged particle moves in a uniform magnetic field, so it gains energy from the field? No, because the direction in which it acts is always perpendicular. It will lose energy, unlikely. In generally, there is ionization observed, but not to the field. It neither gains nor changes energy and momentum. There is a change in momentum because of velocity. So answer is D.
if we move onwards to 45, 45 has to do with a straight wire, and the straight wire has a diameter 0.5 millimeter and it carries a current of 1 ampere and is replaced by another wire whose diameter is different carrying the same current. The strength of the magnetic field for the wire is, there isn't any change because diameter has no impact. So we have a positively charged particle moving due east and it enters a region of uniform magnetic field which is directed vertically upwards. This particle will use left hand rule, so magnetic field is upwards from north to south, direction is eastwards. It will get deflected in vertically upward direction, no. Move in a circular path with increased speed, no. Move in a circular path with uniform speed, yes. And the field inside a solenoid is directly proportional to the length, false. Directly proportional to the current, yes. Inversely proportional to the number of turns, no. Inversely proportional to the current, no. Shows a variation with time T of a low frequency alternating voltage V. So which expression is a representation of this voltage? So it should be peak value is 0.5. It's sine omega t. So omega is 2 pi over t. T is 0.2, so it's 2 pi over 0.2. So it should be 10 ohm into t. 0.5 sine 10 ohm into t. Simple manipulation of the sine formula. So we have an electron that enters the region where the magnetic field and the electric fields are mutually perpendicular. Then it will always move in the direction of B. It will always move in the direction of E. It will always possess circular motion. It can go undeflected also. Yep, it can go undeflected if it possesses a certain velocity which is equal to V is equal to B over E. So a proton which is mass m and charge e, and we have an alpha particle mass 4m and 2e, they are projected with the same kinetic energy at right angles. So which of the following statement will be true? We should know that p square over 2m is equal to ke, and we should also know that mv is equal to b into q into v, and so greater the value of the momentum, greater the value of the force, smaller the radius. So the alpha particle will be bent in a circular path with a smaller radius than the proton, definitely, because while they have the same, no, not necessarily, they're the same kinetic energy. The one with the greater mass will have the more momentum and so will have the more force acting on it. So it's possible that it will have the smaller radius because it would be deflected to a greater extent. Yep, no. The alpha particle will be bent in a circular path with the same radius, unlikely. Will go through the field in a straight line. They said that the entry is at right angles. There should definitely be deflection observed. You can also find another formula. We can do mv square over r is equal to b into q into v. So it becomes p into q into r is equal to m into v. R becomes mv over bq. So when we start comparison, it's impossible to do so because we don't know anything about the velocity. So we can do it this way. The alpha particle, because it has a greater mass, will have the greater momentum. And how much greater does the alpha particle have? It has 4 times the mass, so it has 4 times the momentum.
it has 2 times the charge. So the other one will simply be m into v. Reason being because its mass is 4 times less, and b into qb is the same, and it simply has 1 charge left. So definitely the radius will be smaller, will be higher with that, because mass into मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा है. इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है ना अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से ज़्यादा होगा. आंसर 40 का बी है. है बस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोड्यूस्ड है, एंड दे पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, इन्हीं परपेंडिकुलर नहीं है. हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है विद इट्स वेलोसिटी पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन. सवाल बनता है, विल द इलेक्ट्रॉन टर्न टू द राइट, एंड विल द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट्स वेलोसिटी या फिर डिक्रीज होगी. आप सोचें. यानी अगर हमने इलेक्ट्रॉन को उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया तो आपको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि ऐसे देखें, यानी नॉर्थ टू साउथ कर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, सुपर इम्पोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसे उल्टा हो सकता है, साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, यूँ ही है प्रोबेबली. अब आपने एंटर किया एक इलेक्ट्रॉन को उसी डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ ना. इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव दूसरी साइड पर है, आप नेगेटिव की तरफ कर रहे हैं, तो आप एक रिटार्डेशन आप ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए जिसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज़ करेंगे. इस केस में डायरेक्शंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. A proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field with the same velocity. V same है. So the period of rotation of the alpha particle will be, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, m into omega square into r is equal to b into q into v भी कर सकते हैं. ये ठीक है. सो वो बन जाता है m into 4 pi square over t square into r is equal to b into q into v. ठीक है. अब आप टी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बनता है m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू r ओवर b इंटू q इंटू v इज इक्वल टू टी स्क्वायर. आप अंडर रूट ले लें, ये टी की इक्विवेलेंसी आ जाएगी. हमारे पास एक प्रोटॉन है, हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है, वेलोसिटी सेम है, इसलिए आप वेलोसिटी को इग्नोर कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं. 4 पाई स्क्वायर भी सेम है, आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं. मसला रेडियस का बनता है कि आप उसको कैसे इक्वेट करेंगे. पीरियड ऑफ रोटेशन, बिकॉज हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. तो रेडियस को समहाउ निकाल देना चाहिए. हमें सिर्फ ये पता है कि एक प्रोटॉन है, हमें पता है कि एक अल्फा पार्टिकल है. पीरियड ऑफ रोटेशन हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. ओमेगा को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ये ज़रा कंसिडर करना पड़ेगा थोड़ी डिटेल में. फोर्स के होते हैं b इंटू क्यू इंटू ओमेगा इंटू आर. तो आप करें b इंटू क्यू इंटू ओमेगा इंटू आर इज़ इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. एक ओमेगा ओमेगा भी कट जाएगा, रेडियस भी कट जाएगा, तो बचेगा b इंटू क्यू इज़ इक्वल टू m इंटू 2 पाई ओवर टी. m इंटू 2 पाई ओवर b इंटू क्यू बनेगा. b और 2 पाई द सेम है, m ओवर q को आप ऑब्जर्व करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है. आप अब देखें तो अल्फा पार्टिकल का 4 गुना ज़्यादा मास है, 2 गुना ज़्यादा चार्ज है, तो कट होकर ओवरऑल 2 टाइम ज़्यादा हो जाता है. इसका मतलब ये है कि जो पीरियड रोटेशन है ना अल्फा पार्टिकल की
2 टाइम्स ज़्यादा है प्रोटॉन के। मैं बस एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि मूव करता है विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है बाय द पार्टिकल हमेशा ज़ीरो है, ज़रूरी नहीं है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, कभी ज़ीरो हो। ज़ीरो है अगर बी एंड वी परपेंडिकुलर है, नहीं ज़ीरो है अगर बी एंड वी पैरेलल है। तो आसान था। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द सेम एज सी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कहना चाहिए वैसे। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो कि 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और इसकी वैल्यू है 10⁻³ टेस्ला। तो अब समझ लें कि एक ही बात है। और ये डिस्टेंस भी हमें बता दिया कि 4 सेंटीमीटर का है। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट डिस्टेंस 12, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई ओवर 2πr, क्योंकि करंट को हम कांस्टेंट लिया है, तो अगर जब 4 था तो उसकी वैल्यू इतनी थी, जब वो 3 टाइम गुना बढ़ गया है ना, इसका मतलब है कि वो 3 टाइम्स कम होना चाहिए। इट शुड बी 10⁻³ इंटू 1/3। 1/3 करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि काम कुछ ऐसा होगा, 0.33 × 10⁻³। आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो वो बन जाएगा 3.3 × 10⁻⁻4। ये -4 ही मुझको लग रहा है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव करते हैं सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर का। अगर हमने स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की डबल कर दी है तो रेडियस को क्या होगा? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, और इज इक्वल टू mv/bq। ज़ाहिर है हमने स्पीड को चेंज किया, मास एंड क्यू ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि अनऑल्टर्ड हैं। वेलोसिटी को हमने क्या किया है, हमने डबल कर दिया, मतलब है रेडियस को डबल हो जाना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, 10 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एक्सेस इनसाइड, अगेन इट विल बी करंट मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट, उसकी वैल्यू आसान है 4.10⁻⁷ इंटू n। बाकी चीज़ें इररेलेवेंट हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब है 1 मीटर में 100 × 10 यानी 1000 टर्न्स होंगी। सो अब देखिए ये बनता है 10⁻3, तो ये -7 3 जब कट होगा तो हमारे पास बचेंगे 10⁻⁻4 × 20π। जब हम 2π करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻³ टेस्ला। वो नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में ये -3 ही लिखा हुआ है। गॉस में कन्वर्ट करना है, एक टेस्ला में कितने होते हैं? 4 गॉस होते हैं। गॉस में कन्वर्ट करना होगा ना, आप सिंपली उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2π × 10⁻⁻1 गॉस। इंपॉर्टेंट बात है, ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक टाइम कितने न्यूटन्स के इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁻6 के माइक्रो के। यानी 2 currents carrying conductors are placed parallel as shown in the figure. Which point will experience the strong magnetic field? आपको गौर करना चाहिए, ये डायरेक्शंस जब ऑपोजिट होती है ना तो यहाँ अट्रैक्शन नहीं होती। करंट के केस में वहाँ रिपल्जन होती है। रिपल्जन की वजह ये होती है कि ये जगह स्ट्रॉन्ग हो जाती है जबकि ये वीक होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग की वीक की तरफ हमेशा फोर्स एक्ट करती है। इसका मतलब है एक्स इज स्ट्रॉन्ग। अंदर 33 का ए बना। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ट्रैवल कर रहे हैं विद इक्वल स्पीड और एक ही डायरेक्शन में। स्पीड सेम है, हमें बस इतना सा पता है, मास फ़र्क है ऑब्वियसली।
90 है टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे विच आर इनिशियली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरिंग बाय फैक्टर ऑफ अबाउट 1840, सेम डायरेक्शन में डिफर करी इतने फैक्टर से, इक्वल फोर्स की वैल्यू है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, आइडेंटिकल फोर्सेस हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू V इंटू क्यू इंटू वी। यहाँ तक फोर्स की बात आती है ना, फोर्स B पर डिपेंडेंट है, Q पर डिपेंडेंट है, V पर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी में खुद बता चुके हैं कि वेलोसिटी सेम है, बात सारी Q पर आती है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज भी सेम है, इसका मतलब है उन पर इक्वल फोर्स लगेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमने प्रोटॉन्स को शूट किया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, वो होता है अबाउट 1.673 इन प्रिंसिपल -27 kg। आपको उसकी वैल्यू AMU में भी याद होनी चाहिए, विच इज़ अबाउट, सब मुझे याद नहीं आ रहा, 1.007276 मेरे ख्याल में। न्यूट्रॉन की पता होनी चाहिए 1.65 इन प्रिंसिपल -27, जो बनती है 1.008576। इसकी वैल्यूज़ अगर आपने देखनी है तो आपको मॉडर्न फिज़िक्स के टॉपिक में भी मिलनी चाहिए, आपको न्यूक्लियर फिज़िक्स में भी मिलनी चाहिए, काफ़ी टॉपिक्स में लिखी होंगी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन शायद न्यूक्लियर में ज़्यादा आसानी से मिल जाए। न्यूक्लियर की स्टार्ट नहीं होंगी जब वो एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में हमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। न्यूट्रॉन का है 1.008665, जबकि प्रोटॉन का किधर मिलेगा 1.007276। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं याद करने के लिए। हमने प्रोटॉन्स को परपेंडिकुलरली शूट किया है इन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा मोशन पर, विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, मोमेंटम गेन करेंगे। हाँ, गेन करने वाली बात इतनी करेक्ट नहीं है, विल कंटिन्यू टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट विल गेन मोमेंटम, दे विल बेंड इन आर्क ऑफ अ सर्कल, क्योंकि उनका ना परपेंडिकुलरली कर रहे हैं। A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, ठीक है। The torque acting on it किस बात के इंडिपेंडेंट है, शेप ऑफ द लूप के, एरिया ऑफ द लूप के, वैल्यू ऑफ द करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स की बात है ना, फोर्स होती है B इंटू I इंटू L। मैग्नेटिक फील्ड के तो ज़ाहिर है डिपेंडेंट है, करंट की भी डिपेंडेंट है, एरिया ऑफ द लूप के भी डिपेंडेंट है, लेंथ पर डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी है शेप के साथ। सो दो फ्री पैरेलल वायर्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैरी कर रही हैं, अट्रैक्शन होगी, रिपल्जन होगी मोस्ट लाइकली। If the direction of the initial velocity of the charged particle is perpendicular to the magnetic field, the orbit will be a straight line, an ellipse, circle, a helix. Definitely circle ही हो सकता है। A charge q is moving with a velocity parallel to a magnetic field. Force on the charge due to the magnetic field is ज़ीरो होगी, बिकॉज पैरेलल में ज़ीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑल्टरनेटिंग करंट आई ऑफ पीक वैल्यू इतना वेरी करता है टाइम टी के साथ। ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम पीरियड आपको नज़र आ रहा है, ये मिली सेकंड में गिवन है, ये कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नॉट तो ठीक है, साइन भी ठीक है, ओमेगा इंटू टी पर आए, ओमेगा होता है 2 पाई, आपने 2 पाई को डिवाइड भी तो करना है। टी कैसे आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ तो ये बनेगा यहाँ कन्वर्शन नहीं हुई इसलिए इनएक्यूरेट है। इसको भी, ये भी अनलाइकली मुझे लग रहा है, इसको मतलब और से देखें 2.5 को अगर हम कन्वर्ट करें ना तो ये बनती है वैल्यू 0.0025। लेकिन ये मसला ये है कि यहाँ पर 2 की वैल्यू डिसअपीयर हो गई है, ये गलत बात है। हम अगर 800 को देखें, मुझे सबसे करेक्ट लग रहा है, लेकिन आपको इसको समहाउ वो भी करना चाहिए। 1/0.025 करें ना तो ऊपर चला जाएगा 4।
ठीक है, 2 की वैल्यू अभी उधर ही है। 25 400 हो जाएगा, 400 इंटू 2 करेंगे तो 800 बन जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अनलाइकली लग रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूनिट्स देख लें। आपने हमेशा ऐसे यूनिट्स में डील करना है, क्योंकि और यूनिट्स गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट देम। The direction of magnetic lines of force produced by passing a direct conductor, direct current in the circuit is, आपको AC और DC में भी ख्याल रखना होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ फ़र्क है। Perpendicular to the conductor and coming outwards, perpendicular and going inwards, parallel to the conductor, ये मुमकिन है। सोलोनॉइड की भी बात थोड़ी फ़र्क होती है। करंट कैरिंग सोलोनॉइड अपने राइट हैंड में कि फंगस कर्ल करें द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल से लेकर हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं। तो विद इन द सोलोनॉइड डायरेक्शन इसी से इशू होगी, बिकॉज सोलोनॉइड के अंदर तो नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है। इलेक्ट्रिक करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या लिखना चाहिए सोलोनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक इंडक्शन बी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। बी इज इक्वल टू F/IL, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी हो सकता है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन अ स्ट्रेट वायर। फिनोमेना को किसने डिस्कवर किया था? आई थिंक बंदा फेराडे ने किया था, आई एम नॉट 100% श्योर। ये थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए किसने क्या किया था। एज शोन, अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। नीचे से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज लगेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट्स, नॉनलीज। ये बेसिकली बुक की लाइन है, म्यूचुअल इंडक्शन से होता है। अब ट्रांसफॉर्मर के सवाल आ रहे हैं। वैसे मुझे ट्रांसफॉर्मर वाले कंपेरेटिवली आसान लगते हैं, लेकिन any fun doing them is there. Transformer has 100 turns, primary coil में 8 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। If input power 1 किलोवाट है, P is equal to V into I. The number of turns in the secondary coil to have 500 volt input is, उसने इनको unnecessarily complicate कर दिया। आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप एक सिंपली वोल्टेज निकाल सकते हैं प्राइमरी में। P इक्वल टू 1 आए, P 1000 है एज गिवन, करंट की वैल्यू 8 है, आई अननोन है। डिवाइड करें तो ये बनेगा अबाउट 125। बिल्कुल, मतलब 125 वोल्ट है इधर, तो 125 ओवर 500 करें, NS आप करें 100 टर्न्स, मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 500 ओवर 125, 5 से करना पड़ेगा 100 बन जाएगा। 5 2 Z 10, 5 5 25, 4, तो ये 400 टोटल बनेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स 220 वोल्ट से 11 वोल्ट तक। If the current in the primary and secondary coil are 5 ampere and 90 ampere respectively, efficiency ट्रांसफॉर्मर की कितनी, हम हमेशा पावर के लिहाज से देखते हैं। आप 220 इंटू 5 करें, ये इनिशियल इनपुट थी। 90 इंटू 11 करें, 90 इंटू 11 करें ओवर 220 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 0 0 कट हो जाएंगे। 9 to 11 92 है, 99 ओवर 110 बनता है इंटू 100। 11 से लें, 11 9s है 99, 11 10s are 110 आई थिंक।
फिर 9/10 बना तो ये बनेगा अबाउट 90% एफिशिएंसी, जो कि अच्छी खासी होती है टू बी ऑनेस्ट। और 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। पता चलना चाहिए कि जो भी है ना, प्राइमरी टू सेकेंडरी 5 and 4 है, तो ये ऑपोजिट होगा बेसिकली 4 to 5, और आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी, चेंज द लेवल ऑफ द वोल्टेज। हॉरिजॉन्टली हमने होल्ड किया, बार मैग्नेट हमने ड्रॉप किया थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस। एक्सेलरेशन कैसे होगी? इक्वल टू जी, लेस देन जी होगी। वजह ये कि यहाँ रिपल्जन एग्जर्ट हो रही है। पार्ट से लेकर 2 एम्पियर में इतने टाइम में तो EMF द सेल्फ इंडक्टेंस इन द कॉइल इन मिली हेनरी। हेनरी एक ऐसा यूनिट है जो कि आप अनफेमिलियर है, इसको आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखें तो यह काम चल जाएगा। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको फ़ायदा हुआ। इफ़ आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स लीव करें।